Hello everyone, welcome to Infomercial. This video is a situational based video. What does that mean? It means in this video, you and I will be talking to each other like as we are meeting for the very first time. And as you know that meeting someone for the very first time sometimes becomes very challenging indeed because we need to make our first impression on that person. And you already know that first impression is always unforgettable. So, to make your first meeting memorable and to make your first impression memorable, you need to know what you should ask in your first meeting to someone and what you should not ask to that person. So, in this video, you will also learn about how to introduce yourself. I mean, the introduction, of course. So, let's begin with our today's video lesson. On the very right side of your screen, you will see sentences written in Urdu. मैं उन sentences को आपके लिए पढ़ूंगा. And then, on the left side of your screen, you will have sentences in English. So, मैं उनको अभी आपको पढ़ के बताऊंगा. एक मर्तबा इंग्लिश के सेंटेंस को मैं ब्रोकन लैंग्वेज में पढ़ूंगा और फिर एक मर्तबा मैं आपको नेचुरल वे के अंदर बोलना सिखाऊंगा so that you will have complete idea how to pronounce each and every word of that sentence in broken language, and then after practice you will learn how to speak that sentence in a more natural way. So पहला सवाल, सबसे पहले हम सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम. एंड देन हमारी ग्रीटिंग्स आगे बढ़ती हैं तो हम उससे उनका हाल अहवाल पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया. आप कैसे हैं? आई एम वेरी वेल, थैंक यू. व्हाट अबाउट यू? आई एम वेरी वेल, thank you. What about you? I'm very well, thank you. What about you? And then you ask that person his name. So how do you ask? आपका नाम क्या है? What's your name? What's your name? What's your name? मेरा नाम मोहम्मद है. My name's Muhammad. My name's Muhammad. अगर आप इन दोनों लफ्ज़ों को व्हाट्स और नेम्स को तोड़ेंगे तो आपको एपोस्ट्रोफी एस की जगह पे व्हाट इज लगाना पड़ेगा एंड देन माय नेम इज लगाना पड़ेगा. क्योंकि मैंने यहाँ पे इज मेंशन नहीं किया तो मैंने यहाँ पे व्हाट्स कर दिया, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जिसका मतलब है व्हाट इज, और नेम्स लगा दिया जिसका मतलब है नेम इज. एंड देन यू आस्क अबाउट हिज फादर्स नेम. So how do you ask? आपके वालिद का नाम क्या है? What's your father name? What's your father name? What's your father name? मेरे वालिद का नाम इब्राहिम है. My father's name is Ibrahim. My father's name is Ibrahim. And then you ask about that person's occupation or like वो करते क्या है. So you ask, आप क्या करते हैं? What do you do? What do you do? आप क्या करते हैं? What do you do? मैं तालिब इल्म हूँ, मैं छठी जमात में पढ़ता हूँ. I am a student. I study in grade 6th. So in a more frequent manner, you say, I'm a student, I study in grade 6th. And if you are a university student, so you can say, I'm a student, I study in university, and I'm doing my graduation. For example, you are doing your graduation in nursing, or in engineering, or in commerce. या फिर आप डिग्री का नाम भी बता सकते हैं. I am doing MBBS, or I am doing MBA. या फिर अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, so तब भी आप कह सकते हैं, I'm a student, and I am doing a diploma in computer science. That's it. And then अगर तो वो बंदा जॉब करने वाला हुआ, स्टूडेंट नहीं हुआ, सो आप कैसे पूछेंगे? आप क्या करते हैं? What do you do? What do you do?
फिर उसका जवाब हो सकता है मैं ABC फर्म में बतौर CSR काम करता हूँ. I work at ABC firm as CSR. I work at ABC firm as CSR. CSR means customer service representative. And then you ask about his school, or you can ask about his university as well. आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? At which school do you study? At which school do you study? मैं डोम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ. I study at Dome International School. I study at Dome International School. And then you ask about his subject, his favorite subject. आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है? Which is your favorite subject? Which is your favorite subject? Which is your favorite subject? मेरा पसंदीदा मजमून अंग्रेजी है. My favorite subject is English. My favorite subject is English. अब आपने देखा जब मैंने इसको तोड़ा तो मैंने कहा my favorite, लेकिन जब मैंने इसको रवानी से बोला, प्रैक्टिस जब आपकी होगी अच्छी तो आप इसको frequently बोलेंगे like a native speaker, like a natural way, right? So you will say my favorite subject is English. My favorite subject is English. And then you ask about his age. आपकी उम्र क्या है? What's your age? अब what's your age की जगह आप ये भी पूछ सकते हैं how old are you? मैं 12 साल का हूँ. I am 12 years old. I'm 12 years old. I'm 12 years old. And then you ask about his home, his residency. आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? Where do you live? दो तरह के होते हैं ये वर्ड. live भी होता है और life भी होता है. स्पेलिंग सेम होती है बिल्कुल. live का मतलब है कहाँ रहते हैं. life का मतलब है LIVE. life का मतलब है बराह रास्त. something which is broadcasted to you, something which is shown to you on television, live, right? मैं अल रियाद में रहता हूँ. I live in Riyadh, Saudi Arabia. I live in Riyadh, Saudi Arabia. And then you ask about his favorite color. आपको कौन सा रंग पसंद है? Which color do you like? Which color do you like? मुझे सब्ज रंग पसंद है. I like green color. I like green color. अब यहाँ पे कलर की जगह आप सब्जेक्ट भी रख सकते हैं. सब्जेक्ट की जगह आप भी खेल का भी पूछ सकते हैं कि आप which is your favorite sport, या फिर which sport do you like to play? So you will say I like cricket and I like to play cricket. Alright? Then you ask about his happiness. कि उसको क्या चीज़ खुश करती है? क्या चीज़ आपको खुश करती है? What makes you happy? What makes you happy? What makes you happy? बहुत सी चीज़ें, जैसा कि पढ़ना या ख़ानदान के साथ बाहर जाना या अपने दोस्तों के साथ खेलना. A lot of things such as reading, going out with my family and playing with my friends. A lot of things such as reading, going out with my family and playing with my friends. And then you end a conversation like this. मुझे आपको जानकर बहुत खुशी हुई. हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे. I am glad to know you now. We will be in touch with each other. I'm glad to know you now. We will be in touch with each other. या फिर आप कह सकते हैं आपसे बात करके बेहद खुशी हुई. It was an absolute pleasure talking to you. It was an absolute pleasure talking to you. So this was all for today's video lesson. And इन तमाम तर sentences को जो भी आपने जवाबों के अंदर सीखा है, उन तमाम तर जवाबात को अगर आप मिला दें तो आपका introduction भी बन जाएगा. And you can read your introduction in the description of this video. So go check that out and read it, and you will eventually know how to introduce yourself in wording. So, thank you, like this video, share it with your friends and colleagues, and subscribe to Infomercial. Thank you.